गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। लास्ट क्लास में हमने डेरिवेटिव्स की बात की थी, डिफरेंशिएशन की बात की थी, और डिफरेंशिएशंस के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स क्या है, किस किस तरह के फंक्शंस या किस किस तरह के रूल्स रहते हैं। लाइक वी डिस्कस द प्रोडक्ट रूल, वी डिस्कस द क्वोशिएंट रूल, और इन रूल्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए। और डिफरेंशिएशन में हमने उसकी एप्लीकेशन भी डिस्कस की। खासकर हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की। यूजिंग द डिफरेंशिएशन वी कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। दोज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज की क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशंस। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। हम इंटीग्रेशन के बारे में सीखेंगे, एक फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है और इसकी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या रहती है विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स। वो सारी चीजें हम देखेंगे। इंटीग्रेशन हमारे पास दो तरह का होता है। वन इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड अनदर इज डेफिनिट इंटीग्रल। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सपोज हमारे पास जो है, अगर फंक्शन दी गई है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते थे? t अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, दैट्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो है एक फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया है, तो हमें फंक्शन कैलकुलेट करना है कि वो फंक्शन कौन सी है जिसका हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया हुआ है। इफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज गिवन, if derivative of a function is given, then the function is calculated using the concept of integration। तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके एक फंक्शन का जिसका डेरिवेटिव गिवन है हमारे पास, उस फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसी का हम दूसरा नाम भी देते हैं, दैट्स एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव। मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू टी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास डेरिवेटिव किसका? फंक्शन एफ ऑफ एक्स का। और हमें यही एफ ऑफ एक्स जो है कैलकुलेट करना है यूजिंग इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे? हम dx को ऑन द LHS ले जाएंगे एंड df ऑफ f of x on the RHS, then we'll integrate it on both sides। ये इंटीग्रल जो है, it represents a continuous summation, continuous summation, it's a continuous sum। और जब हम इस y को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, then what we will get is f of x, that's integral of y of dx plus some
इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दैट्स सी। सी को क्या कहा जाता है? दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ बाउंड्री कंडीशन, हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द बाउंड्री कंडीशंस। सो दैट्स हाउ वी डिफाइन द इंटीग्रेशन। और इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव डिफरेंट रूल्स। डिफरेंट रूल्स हमारे पास है एक इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए, जो आपने क्लास 11 में डिफरेंट रूल्स देखे होंगे किस तरह से हम एक इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। बट इन दिस क्लास वी विल समराइज ऑल दोज स्पेशल इंटीग्रल्स जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, या मैथमेटिक्स में उसका बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज रहता है, इवन इन फिजिक्स में उनका बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज रहता है। सपोज हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है x टू द पावर n, and we have to integrate it with respect to x. The integration of x to the power n with respect to x is nothing, it's x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c. But the important condition is that this n should not be equal to minus 1. Reason is that कि अगर if n is equal to minus 1, तो इंटीग्रेशन जो है नॉट डिफाइन हो जाएगा, बिकॉज वी विल गेट x to the power 0, that's 1 upon 0, जो एक नॉन डिफाइंड क्वांटिटी होगी, वो एक नॉन डिफाइंड क्वांटिटी होगी। दैट्स द रीजन कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन हम माइनस n इक्वल टू माइनस 1 के लिए डिफाइन नहीं करते। सो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, दैट्स ओनली वैलिड फॉर every value of n except minus 1. So integral of dx upon x is nothing, this log of x plus c. The integral of sin x with respect to x is nothing, it's minus cos of x plus c. And integral of cos x with respect to x is nothing, sin x plus this c integration constant. And similarly, integral of e to the power x with respect to x is nothing, e to the power x plus c. So these are some of the basic या फंडामेंटल इंटीग्रल्स जो हम डेली या फ्रीक्वेंटली फिजिक्स में यूज करते हैं, ऑल दीज इंटीग्रल्स। इसी तरह से हम इन सारी रूल्स को या इन सारी प्रॉपर्टीज को हम यूज करके, इन सारी इंटीग्रल्स का यूज करके जो हमें याद होने चाहिए सारे इंटीग्रल्स, ऑल दीज इंटीग्रल्स शुड बी एट द टिप ऑफ द टंग, ताकि हम इसको कहीं पे भी फिजिक्स में किसी भी चैप्टर में एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट इसका यूज कर सकें। तो ये सारे इंटीग्रल्स हमें डेली लाइफ में याद होने चाहिए, खासकर फॉर द फिजिक्स स्टूडेंट हु इज स्टडिंग फिजिक्स, बी इट क्लास 11 फिजिक्स और क्लास 12 फिजिक्स। सो वहां पे हम इन चीजों का डायरेक्टली यूज करते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज इंटीग्रल्स। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है कि दैट फाइंड द इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर x dx। इसका इंटीग्रल क्या होगा? वी नो integral of x to the power n dx, it's nothing, x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c. तो यहाँ पे क्या होगा? इंटीग्रल x to the power 6, it will be x to the power 6 plus 1 upon 6 plus 1 plus c. इसका आंसर क्या होगा? x to the power 7 upon 7 plus c. Let's move on to the question number 2. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, that's given as integral of एक्स क्यूब डी एक्स। सिमिलरली अगर एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं, सो इट विल बी नथिंग, एक्स टू द पावर 3 plus 1 upon 3 plus 1 plus
c, it's x to the power 4 upon 4 plus c. That's how we'll calculate the integration of x cube. So integral of dx upon root x, इसका इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करें? Can write it dx upon x to the power 1 by 2. It will be nothing but x to the power minus 1 upon 2 dx. Now once again using the same formula, so it will be integration minus 1 by 2 plus 1 upon minus 1 by 2 plus 1 plus c. So it will be x to the power 1 by 2 upon 1 by 2 plus c. So it's nothing 2 root x plus c. 2 root x plus c. So it's 2 root x plus c. So integral of 1 by root x is 2 root x plus c. And there is one more property of the integrations. Suppose we have to integrate u plus minus v dx. The integration क्या होता है कि it's a distributive. इंटीग्रल जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक फंक्शन में. तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इंटीग्रल ऑफ u dx plus minus integral of v dx. That's how, if the function is of the form of u plus minus v, then that's how we'll calculate the integral. हम इंटीग्रल को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एज इट इज इसको इंटीग्रेट करेंगे एंड विल गेट द फाइनल आंसर. इसी तरह से हमारे पास एक एग्जाम्पल है लाइक इंटीग्रल ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2. 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2. तो इसका इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इसका अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, इसका अलग से इंटीग्रेशन करेंगे और इसका अलग से इंटीग्रेशन करेंगे. So it's integral of 4x square dx minus integral of 6x dx plus integral of 2 dx. Once again, एक important property of the integral is if we integrate constant with respect to constant multiplied by some function with respect to x, then what happens is that constants will come out of the integral and we will integrate this function. हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे. सिमिलरली सेम चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे. That 4 is a constant, it will come out of the integral, so it will be x square dx. So integration of x square, once again it will be nothing, x cube upon 3 plus c, x cube upon 3 plus c. So it will be x cube upon 3 plus c minus 6 integral of x with respect to x. It will be x square upon 2 plus 2 will be out of the integral, and integral of dx, it is going to be x plus c. So यहाँ से ये गया and we will be left with 4x cube upon 3 minus x square 3x square plus 2x plus c. So that will be the final answer of this particular integral. Let's try to solve this question. That is integral of root x plus 1 upon root x whole square dx. How we will solve this question? That is integral of root x plus, कैसे इसको करते हैं, 1 plus 1 upon root x का whole square dx. हम एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. I will use a plus b का whole square and then open this function, और फिर इसको once again distributive property of integrals use करके इस integration को calculate करेंगे. So root x plus 1 by root x का whole square, we can write it like this. It will be a square, that's x, plus b square, it will be 1 by x,
plus twice root x into 1 upon root x dx. तो यहाँ से रूट एक्स और रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा. वी लेफ्ट विथ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 dx. अब हम इंटीग्रल को वन सेकेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इट विल बी इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस dx upon x प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 dx. फाइनली हमारे पास क्या आंसर आएगा. इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x विल बी x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस integral of dx upon x, it's nothing, it's log of x, it's 2x plus c. So this will be the final answer for this question. Similarly, we have another question, that's integral of cos theta minus sin theta plus 3 with respect to theta. The integral is integral of cos theta minus sin theta plus 3 into d theta. Once again हम इसमें भी distributive property use करेंगे. So it will be integral of cos theta d theta minus integral of sin theta d theta plus integral of 3d theta. For integration of cos theta with respect to theta, cos x with respect to x, it's nothing, it's sin x. It will be sin theta. And integration of sin theta with respect to theta, it's minus cos theta, so it will be cos theta here. Plus, and 3 will be outside of this integral, and it will be 3 times theta plus some integration constant c. So this is the final answer for this particular integral. So all these integrals were indefinite integrals. All the integrals, जो भी सारे integrals हमने solve किए, these were indefinite integrals without any proper limits. Indefinite integrals का मतलब ये है कि integrals without any proper limits. Integrals without any proper limits, without any limits. यहाँ पे हम limits की बात नहीं करेंगे. That's why instead of limits, we introduced a integration constant in indefinite integrals. जो importance definite integral में limits की होती है, and same is the importance of integration constant in case of indefinite integrals. So that's the reason कि हम जब हम definite integrals की बात करेंगे तो हम proper limits के साथ जाएंगे. We'll apply proper limits like you can see the questions here. तो वहां पे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की बात नहीं करेंगे, बिकॉज जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट सिग्निफाई करता है, a same thing has been introduced in definite integrals as a limits. वहां पे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की बात नहीं करेंगे. So now we can solve all these integrals you are seeing on the screen are the definite integrals. We have a proper limits here, so we'll not be using any integration constant in these integrals. बाकी जितने भी रूल्स है इंटीग्रेशन के, जितने भी रूल्स है हमारे पास इंटीग्रेशन के, वो सारे रूल्स एज इट इज सेम है, उनमें कोई भी चेंज नहीं है. तो ऑल दोस रूल्स आर सेम. First question is that try to calculate the integral of 10x square minus 4x plus 4. So let me just give a brief idea about first of all, give brief idea about these definite integrals, what they actually represent. Suppose that we have some function f of x like this. This is a function f of x. And this function, this is a curve, and this curve encloses some area under it.
Suppose between x1 and x2, we have to find what is the area enclosed by this curve. Area enclosed by this curve. The area enclosed by this curve will be given by this indefinite integral. That's we will do the integration of this function f of x dx. We integrate this function within the limits from x1 to x2. We'll get this area under this curve. Under this curve पर between x1 and x2. हम इस एरिया की बात कर रहे हैं. So definite integrals represent the area under the curve. किसी भी कर्व का अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है बिटवीन गिवन लिमिट्स या स्पेसिफिक लिमिट्स, तो हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे विद इन द लिमिट्स, विल गेट द एरिया क्लोज विद इन दैट कर्व. So that's the importance of definite integrals. Now let's try to solve this question. हमारे पास क्वेश्चन है कि विद इन लिमिट्स 1 to 2 द फंक्शन इज 10x स्क्वायर -4x + 4 dx. हम इसका इंटीग्रल एज इट इज वैसे ही निकालेंगे जैसे हम एक पॉलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं. देन वी विल जस्ट put the limits, final limits and the upper limit and the lower limit, and try to calculate the final answer. So it will be integral of 10x square dx. Distributive property फिर से मैंने यूज की यहाँ पे. Integral of x dx plus 4 times integral of dx, but the limit is from 1 to 2. It will be 10 times x square की integration. It will be x cube upon 3, 1 to 2. And the x square की integration, it will be x square upon 2 from 1 to 2. And the integration of dx will be x, and the limits will be 1 to 2. Now substituting the respective limits, upper limit and the lower limit, ये 3 जो है इस फंक्शन से मैं बाहर लेके आ सकता हूँ, इस इंटीग्रेशन से बाहर लेके आ सकता हूँ. सो फाइनली क्या होगा कि हम अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे लाइक दिस. अपर लिमिट दैट्स 2 क्यूब माइनस लोअर लिमिट दैट्स 1 क्यूब -4. यहाँ से भी 2 बाहर आएगा, to be 2 square minus 1 square plus 4, to be 2 minus 1. It will be 10 upon 3, to be 8 minus 1, that's 7. It will be minus 2 into 3 plus 4. फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? It will be 70 upon 3 minus 6 plus 4, that is 70 upon 3 minus 2, that is 70 minus 6 upon 3, that's nothing but 64 upon 3. That will be the area under this curve. Suppose the unit is can be anything, we will just put unit square here. If the unit is centimeter, it will be centimeter square for here, or if the unit is meter, it will be meter square. It represents the area under this curve, right? So 64 upon 3 will be the area under this curve for this particular function, that's 10x square minus 4x plus 4. Similarly, we have another function that's integral of cos x dx. The limits are given as from 0 to pi upon 3. So the integral is integral of cos x dx, and the limits are from 0 to pi upon 3. You know the integration of cos x, it's nothing but sin x, right? And the limits are once again 0 to pi upon 3.
Limits are from 0 to pi upon 3. So we'll substitute the upper limit, that is sine of pi by 3 minus sine of 0. We know sine of pi by 3, it's nothing. The value of sine 60 degree, it's root 3 upon 2, and the sine 0 is 0. So the final answer will be root 3 upon 2. That's the area. If we suppose that हमारे पास एक cos फंक्शन दी गई है, and we know कि एक cos फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, just like this. This is how the cos function varies, right? And suppose that for an angle of 0 to pi by 3, suppose that from this here to here it's an angle of pi by 2. This is pi, this is 3 pi by 2, and this is once again, this is 2 pi. And somewhere here, the angle here will be pi upon 3. If we calculate the area between this point and this 0, the area enclosed within this curve, this will be the area enclosed. This will be the area enclosed from 0 to pi by 3. And the value of this area will be nothing but root 3 upon 2. That's what do we mean by when we integrate a cos x from 0 to pi by 3. Let's move on to the next question. That's we have to find the integral of sin x dx from minus pi by 2 to plus pi by 2. Minus pi by 2 to plus pi by 2. So integral of sin x dx from minus pi by 2 to plus pi by 2. So integral of the sin x with respect to x, it's nothing, it's minus cos x. And the limits are minus pi upon 2 to plus pi upon 2. Minus cos of pi by 2 minus cos of minus pi by 2. We know an important property of a cosine function, that cos of x is nothing, it's equal to cos of minus x. Because we know that cos function is an even function. It's an even function. So we can say that cos of x will be equal to cos of minus x. So the value of cos of minus pi by 2 will be same as the value of cos of pi by 2. So from here we can just conclude that it will be cos pi by 2 minus cos pi by 2, which will go to 0. It will go to 0. What does it mean? Does it mean that area between minus pi by 2 and plus pi by 2 is 0? Let's try to see what happens. This is how the sine function is plotted as a function of x. This is our sine function as a function of x. This area we take as positive and this area we take as negative. And from here to this is a 0 point, and from here to here is the value of pi by 2, and this point will represent a value of x equal to minus pi by 2. You can see जितना एरिया हमारे पास, जितना पॉजिटिव एरिया हमारे पास यहाँ पे है, सेम एरिया इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव एरिया हमारे पास यहाँ पे.
तो जिसकी वजह से हमारे पास टोटल एरिया जो है, टोटल एरिया यहाँ पे 0 के बराबर आ जाता है। टोटल एरिया कम्स आउट टू बी 0। तो यही मतलब है इसका कि इफ वी इंटीग्रेट साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, the area will be, the area comes out to be 0. It comes out to be 0. It's an important property that if we have any odd function, हमारे पास कोई भी odd function हो, कोई भी odd function, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे from limits minus a to plus a. Its value will always go to 0. That's an important property of integrals. One of the important properties of integrals. Sin x भी क्या है? ये एक odd function. It's a odd function. Odd function का मतलब क्या? Sin of sin of minus x or sin of x is nothing. It will be equal to sin of x ऑड फंक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे sin of minus x it will be equal to minus sin of x. That's what do we mean by here the odd function. Yeah, in general अगर हमारे पास f of x minus f of minus x के बराबर हो, that function will be even function, और f of x minus f of minus x के बराबर आ जाए, then the function will be called as odd function. So odd function, कोई भी odd function हो, if we integrate that odd function from minus a to a, the integral will go to 0. And we have one more integral here, that's e to the power minus 2t. Or let's do it like this, e to the power minus t with respect to t, and we have to integrate it from infinity to 0. Right? Integration of e to the power minus t, it will be e to the power minus t into minus 1 with limits infinite to 0. So it will be minus e to the power minus 0 minus e to the power minus infinity. Right? So it will be nothing. E to the power 0, it will be 1 minus e to the power minus infinity. E to the power minus infinity is nothing. It's 1 upon e to the power infinite. This goes to infinity. It means this whole term will go to 0. This whole term will go to 0. So from here, this will be 0. So we'll be left with minus 1. So minus 1 will be the final answer for this question. Now, important aspect of these integrations or the definite integrals is their applications. In physics, we have many applications about these integrals. There are many applications in kinematics, in dynamics, in thermodynamics as well. Let's try to explore कि कहाँ कहाँ पे हम इन चीजों को अप्लाई करते हैं. Suppose we defined velocity as it's the rate of change of displacement or the rate of change of position vector with respect to time. That's our velocity. If we try to integrate this velocity with respect to time, हमें क्या मिलेगा? That's integral of dx. It will be nothing. From limits, let's suppose from t1 to t2. At time t1, let's suppose that the position of this particle was x1, and at time t2, let's suppose the position of this particle is x2. So its integral will be nothing.
it will be x with the limits of x1 vector to x2 vector, right? So integral of this velocity vector with respect to time, putting the upper limit and the lower limit, so it will be x2 vector minus x1 vector, right? So this represents the displacement. Displacement. So what does this represent? Area under VT graph. This definite integral represents area under VT graph. So it means that area under VT graph represents displacement. It gives us the total displacement within the limits, right? So within the limits, area under the VT graph gives us the displacement. Let's try to solve this question. The question says that initial position of a particle is x equal to 20 meter, that xi has been given as 20 meter. And its velocity as a function of time is given as 2t square minus 4t meter per second. The question is find the position of the particle at time t equal to 3 seconds. We have to find the final position of this particle at time t equal to 3 seconds. What we'll do is that we'll just integrate this velocity with respect to time from t1 to t2, and we will get the integration of this position vector, and finally we'll be left with final position vector minus initial position. So we have been given as final position we have to calculate, and initial position is given as 20 meters. So we'll put x initial as 20. So integration of Vt, that's 2t square minus 4t with respect to t, with a limit at time t equal to 0, the position was 20, so the time is 0, and we have to find the final position at time t equal to 3 seconds. So it will be 2 t cube upon 3 from 0 to 3 minus 4 t square upon t square upon 2 from 0 to 3. So substituting the upper limit and the lower limit, will be left with 2 upon 3. 3 cube, it will be 27 minus 0 minus 2, and 3 square, it will be 9. Okay, it will be 9. That will be equal to x final minus 20. So 3 9 9 2s are 18. 18 minus 2 9s are 18. Minus 20. So this will become 0. So final position is once again same, that's 20. So it means that after 3 seconds, the particle returns to the same position. After 3 seconds, the particle returns to the same position as it was at time t equal to 0. As it was at time t equal to 0. Let's try to solve another question. Initial velocity of a particle is 2u0, and the acceleration is given as kt as a function of time, and the velocity at later time t. So our acceleration is nothing, it's dv upon dt. That's the first derivative of time, first derivative of velocity with respect to time. So from here, dv will be nothing, it will be integral of d will be nothing, integral of a dt. The value of a is given as kt dt, and at time t equal to 0,
The velocity of the particle was given as 2 u naught, and you have to find velocity at later time t. Velocity at later time t. Let's suppose that velocity is v when the time is t. So our velocity integral of dv will be nothing. It will be v. It will be v with the initial limit of 2 u naught and final limit of v. And the integration of kt will be nothing. K will be outside the integral. It will be t square upon 2 with limits 0 to t. So we'll be left with kt square upon 2. So it will be v minus 2 u naught is equal to kt square upon 2. From here, the final velocity will be nothing. 2 u naught plus kt square upon 2. So this will be the final equation of the velocity as a function of time. So that was it for today. आज हमने इंटीग्रल्स के बारे में देखा और एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशंस. And in the next class, we'll be discussing about some more applications of integration, and we'll be starting with the vectors. Till then, take care and goodbye.